Good morning, dear students. So, today we will start up with our next new chapter, that is sources of energy. First of all, let me tell you what is an energy. Energy, it is the ability to do work. Energy comes in different forms, likewise, heat energy, light energy, and motion energy. In physics, energy is the quantitative property that must be transferred to an object to perform work. But the most important question is why energy is essential for our survival in this world? Why? What is the reason? It's because all our everyday activities use energy in one or other form, and if there is no energy, all our activities would come to stop. How come? See, if there is no energy, we won't be able to cook food. If there is no energy, we won't be able to run cars, trucks, buses, etc. Similarly, if there is no energy, we won't be able to run machines in our factories, in our thermal power plants. This is the reason why energy is considered to be as an essential part of our survival in this whole world. That means a good source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. Till now, we have two different types of energies. That means this source of energy, it is divided into two groups. What are these two groups? This is renewable and non-renewable source of energy. Let us study them one by one. First of all, we will take up with non-renewable source of energy. Non-renewable source of energy are those sources of energy which have accumulated in nature over a long period of time and cannot be quickly replaced when they are exhausted. For example, coal. Coal is a non-renewable source of energy. Why? Because coal has accumulated in the earth over a very long period of time. And if, God forbid, it gets exhausted, then we won't be able to reproduce it quickly in nature. The non-renewable sources of energy are fossil fuels. Likewise, we have coal, we have petroleum, we have natural gas. In fact, our nuclear fuels that also come in the category of non-renewable sources. This is the reason non-renewable sources of the earth, they are dug out from the earth. They're also called as conventional sources of energy because once exhausted, we won't be able to get them back and they won't be available to us in the near future. Now, coming to the renewable source of energy, these are obviously those sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible. For example, wood. Wood is a renewable source of energy. Why? Because if trees are cut from the forest for obtaining wood, then more trees will grow in the forest in due course of time. That means the loss of wood by the cutting trees is made good by the nature. The renewable sources of energy are hydro energy, solar energy, wind energy, even energy from the sea that consists of tidal energy, sea wave energy, ocean thermal energy. This is the reason why renewable source of energy is also called as non-conventional source of energy because these sources of energy can be used again and again endlessly. ओके नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आप किस चीज को कहेंगे कि एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का? जब भी हम काम करते हैं हमारी बॉडी को इनफैक्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय सम सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क हमने कैसा करना है। कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अच्छे है बट नॉट नेसेसरी कि हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा है। दैट मीन्स क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। सबसे पहला है कि जो ये अच्छा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है इट शुड बी ये वो होना चाहिए विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम. इट शुड बी cheap and easily available. It should be easy to store, easy to transport, easy to handle, and most importantly it should be eco-friendly. That means it which does not cause any environmental pollution. Now the most common source of energy which is available to us that are fuels. Fine. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्यूल्स जो है वो किसको आप कहेंगे. फ्यूल्स होते क्या है? द मटीरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी उन्हें आप फ्यूल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा कुकिंग गैस दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डीजल है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, वुड है, कोल है. दीज आर ऑल फ्यूल्स. फ्यूल्स को इनफैक्ट इसीलिए हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द जो ये फ्यूल्स है इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या क्वालिटीज है. फ्यूल्स जो है सबसे पहले इनमें हायर कैलोरिफिक वैल्यू होना चाहिए. दैट मीन्स एन आइडियल फ्यूल इज दैट विच गिव्स आउट मोर हीट पर यूनिट मास. इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि इट कैन बी बर्न इजिली. द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल फ्यूल
इट शुड नीदर बी, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। क्यों? अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या फॉर एग्जाम्पल अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है कम हो गया, उसका मतलब है कि वो फायर जो है इजीली कैच कर सकता है एंड हेंस इट विल बी वेरी अनसेफ टू यूज इट। और अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लाइट द फ्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव एनी एश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड बर्न वेरी स्मूथली। दैट मीन्स बर्न स्मूथली मीन्स द फ्यूल शुड नीदर बी टू फास्ट नॉर इट शुड बी टू स्लो।